Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, today we are going to discuss about the easiest method to study Code of Civil Procedure. But before we start with our discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of beneficial videos that we keep on coming up at LegalB. And also, you can write to us at hello@iexamb.com directly for any of their queries. You can call on this number, and also you can visit www.iexamb.com and check out the details of all the courses as well. सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, they have code of civil procedure in the syllabus, and I have observed that many students have a problem in studying procedural laws, especially the code of civil procedure and code of criminal procedure. They find it difficult to study in less span of time. But let me tell you, don't wait for the notification. Start your studies immediately if you have not started. SEBI notification is expected soon, and legal vacancies are also expected. But these all, you don't have to wait for all these things. You should start your studies immediately. And अगर हम CPC की बात करें, so it is a very vast code. It is very exhaustive, but there is still an easier technique to study it comprehensively, and that too in a proper, concise manner in less span of time. So let us see that, and also do download the PDF that I am going to share with you along with this video. उसे ज़रूर download कीजिएगा and take benefit of that. That PDF is actually a summary sheet that I am sharing with you all. iExamB is providing such kind of summary sheets for all the subjects. I am discussing with you about CPC, so you can download the summary sheet. All the important provisions from CPC have been discussed in this. So do download it and take reference for that for your preparation. Exam pattern अगर हम एक बार देख ले quickly SEBI का, that is for paper 1 you have same actually. MCQs are there, general awareness, English language, quantitative aptitude and reasoning is there. And if you focus on legal, for legal also you are having 100 questions, but those 100 questions are for 40 marks. Then in phase 2 also you have the same pattern, only for paper 1 you have descriptive English. Paper 2 is again legal only. But what is important here is that in phase 2 it is not qualifying in nature, it is having a lot of weightage in your final selection. For phase 1 your exams are just for qualifying it, and the marks are not carried forward in the next round. But for phase 2 it is not so. In phase 2 you have to score really well. So such kind of acts and codes you really need to go through well and understand the technique of studying all these codes, all these acts which are very exhaustive in nature, how you have to study it. So CPC पहले अगर हम syllabus check करें, phase 1 में आपको सिर्फ part 1 और part 2 ही है. You don't have the order, that is the schedule that is added in phase 2. First schedule is added in phase 2, that is consisting of all the orders. Out of that also only you have to go through the important orders only, and in parts as well, part 3, 4, 5 and 7 has been added in phase 2. Do keep in mind that SEBI sticks to the syllabus, so according to that only you have to study. Stick to the syllabus, don't do anything extra. अब हम लोग क्विकली एक काम करते हैं. मैं आपके साथ एक समरी शीट जो मैंने आपसे बताया है, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हो, आई विल क्विकली शेयर दैट विद यू. Okay, so the CPC section summary, as I told you, this is the document for that purpose that I have shared with you. You can check out all the, it is having a list of important sections in a tabular format. The objective, if we are seeing for CPC, it is an act to consolidate and amend all the laws and procedure that was prevailing at that time relating to the procedure that has to be followed by the courts of civil judicature. Of course, the section 1 that is talking about enactment and commencement date, इससे हम शुरुआत करेंगे. And then suits in general is the first part. यहाँ पे कुछ important definitions है जो आपको CPC में पूछी जाती हैं, like decree, means profit, judgment, डिक्री ऑर्डर एंड जजमेंट का डिफरेंस, ये सब बहुत बेसिक है. आप देख रहे हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने. फॉर एग्जांपल मींस प्रॉफिट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है सेबी एग्जाम में.
फेज़ 1 में तो कई बार आया है. सो इट इज़ कवर्ड अंडर क्लॉज 12. तो यहाँ पर इस शीट में हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बहुत कंसाइजली इसको पिक किया हुआ है. मीन्स प्रॉफिट इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of the property has actually received, but he has to give all those profits back to the rightful owner once the possession has been returned back and court makes an order for that. Then section 9 court is it is talking about the jurisdiction of civil courts, so that you should be very clear with. 10 and 11 stay of suit, res judicata principle, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा, ये तो बहुत ही सेलिब्रेटेड टॉपिक है सीपीसी से. सो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं. देन फॉरेन जजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं. सेक्शन 13 and 14 इज टॉकिंग अबाउट दैट. Then moving ahead, you have various other sections as you can see, 17, 19, 20. Then starting towards the institution of suits, यहाँ से actually पूरा procedure start हो रहा है. So that is why this is important. It is a very short section, but you can remember that this marks the beginning of a suit. So institution of a suit. Then summons is a very important part from CPC. Summons is issued to witnesses as well, and if suppose a witness does not appear, even against him a warrant can be issued. So ऐसे कुछ questions होते हैं जिसमें ऐसा कुछ stringent दिया हुआ है CPC में. For example, execution में भी आपको एक ऐसा question मिल सकता है that the judgment debtor is detained in prison in which cases. So ऐसे कुछ चीज़ें जो होती हैं that you have to mark it and do it प्रॉपरली. जैसे मैंने आपसे अभी कहा दैट दिस इज स्ट्रिंजेंट. सिविल प्रोसीजर कोड में स्ट्रिंजेंट क्या हो सकता है, जहाँ पे पेनल्टी अरेस्ट की हो. ये एक अरेस्ट की जो कंसेप्ट है, दिस इज अ कंसेप्ट दैट इज फॉलोड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर. बट सिविल प्रोसीजर में ये कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, विटनेस के अगेंस्ट हो रहा है क्या, व्हाट इज द पेनल्टी, ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी क्लियर. देन जजमेंट डेप्टर कैन बी डिटेन्ड इन विच केसेस, ऑल दोज थिंग्स. एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट 2. ऑर्डर्स में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी दैट यू कैन गो थ्रू. अब फेज़ 1 के लिए अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से आप चेकआउट करो, इतने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं. आई एम गोइंग थ्रू इट इन द शीट. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट प्रॉपरली बाय डाउनलोडिंग इट. यू कैन ईजिली cover all the important sections. Now section 47 is landmark, as it is telling you the questions that can be determined by the court which is executing a decree. Then legal representatives, and section 51 is talking about the powers of the court to enforce execution. So it is talking about all the modes which court can follow for एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूशन पावर्स. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 मोड्स डिस्कस किए. द 5th वन इज़ एक्चुअली अ जनरल थिंग विच इंक्रीजेज द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूशन कोर्ट दैट इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर. सो सेक्शन 51 इसका लैंडमार्क प्रोविजन है. इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको ऑर्डर 21 में डिटेल मिलेंगे. दोज आर द रूल्स. देन अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 50. Then prohibition of arrest or detention of women in execution of decree of money. Now for execution of decree of money, you cannot arrest a woman. This is a rule that is there in CPC. So this is the substantial part of CPC. मैंने बार मैं ये स्टूडेंट से कहती हूँ कि ऐसे जो यूनिक एरियाज होते हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, डोंट लीव देम, ऑलवेज फोकस ऑन देम. सेक्शन 56 you can mark as important. And in this manner, if you go through, you will definitely be able to cover CPC in a very good manner, and that too in a reasonable time. Now this section 60 is very important from execution, as it talks about the properties that can be attached and sold by the executing court. So ये सारी list of properties है जो यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हो. इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे कवर किया है इस शीट में. And property that is not liable to be attached or sold is, suppose for example, the necessary wearing apparel, cooking vessels, all these things cannot be attached or sold. So ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एग्जीक्यूशन में से सेक्शन 60 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ बिग सेक्शन, but if you understand the concept or logic behind the things that are being attached and things that are not being attached, then you can easily answer questions relating to that. Then resistance to execution से related एक question आया था phase 2 में सेबी एग्जाम में. So ये भी section काफ़ी important है.
इसके बाद वाले पार्ट्स में से मैंने काफ़ी जो फ़ेज़ 2 में ऐड हुए हैं, फ़ेज़ 1 में तो है ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पिक किए हुए हैं. यू कैन गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक दैट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर्स, very selectively, the most important orders have been covered here. Like order 5, summons is very important. Some rules are very important out of that. 17, 20, substituted service. Then moving ahead with plain written statement, सेट ऑफ काउंटर क्लेम का कंसेप्ट, रिजेक्शन ऑफ प्लेन. तो ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो बहुत लैंडमार्क है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. देन ऑर्डर 9, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. एंड इन ऑर्डर्स में से भी अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स करते हो, दैट विल बी इनफ फॉर यू. सो लाइक दिस व्हाट विल हैपन, यू कैन कवर एवरीथिंग फ्रॉम CPC in the best way and the easiest way. That is what is the thing which I want to convey to you. Order 21 is quite a big order. In that also, स्टे ऑफ सूट एंड मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. जैसे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिक्रीज को डिफरेंट मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन दिए गए हैं. The way they are being executed, that differs. So according to that, if you are very clear, for example, decree for restitution of conjugal rights, how it is executed, डिक्री फॉर मनी, हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड. तो इसको अगर आप अच्छे से कंसाइजली प्रिपेयर करते हो, दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग. एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट रूल्स, 21 के रूल्स थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपेयर टू ऑल अदर ऑर्डर्स, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्डर एंड एन इम्पॉर्टेंट वन. बट इसको आपको फेज़ 2 के लिए ही करना है. सो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर द एंटायर CPC इन अ वेरी ईजी मैनर. एंड इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा. Now here one more example I will give you before I stop. Negotiable instruments and shares in corporations. अब ये जो रूल है एग्जीक्यूशन का relating to negotiable instruments है and shares है, that is rule number 76. अब ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? I think it is needless for me to say that, because the exam that you are preparing for is relating to this. You know the field of exam that you are preparing for. उसको भी आपको ध्यान में रख के कुछ लॉजिक अप्लाई करके कुछ प्रोविजंस जो आपके आंखों के नीचे आते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दोज प्रोविजंस. सो लाइक दिस आई वुड सजेस्ट दैट दिस विल बी द बेस्ट वे फॉर यू टू प्रिपेयर. एंड ऑल्सो फॉर एनी फर्दर क्वेरीज एंड डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू अस at iExamB anytime. And don't forget to subscribe to our YouTube channels and stay updated with all such kind of beneficial videos and prepare 50% faster with iExamB. Thank you so much, everybody.